Good morning, everyone. Topic for the today is electric dipole. Electric dipole is usually defined as assembly of two equal and opposite charges separated by very small distance. So दो charges का pair दोनों equal, amount में दोनों equal है, एक अगर plus q है दूसरा minus q है, दोनों charges को अगर एक small distance से separate करके रखा जाए then the assembly is known as electric dipole. आप इसको ऐसे करके कुछ इस तरह से भी ले सकते हो, it's minus q plus q, distance बीच की l लेंगे. So for the simplicity मैंने इसको 2a लिया because मैं चीजों को सेंटर से डिवाइड करूंगा. That's why उसको l/2 ना लेना पड़े. So we prefer कि उसको 2a लिया जाए तो ये a और a बन जाए. Right? The only purpose is that. But otherwise you can go for this two charges separated by a very small distance. Electric dipole. अगर हम डाइपोल के एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, HCl, यूजुअली जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये डाइपोल का एग्जाम्पल है. इवन आप H2O को भी डाइपोल मान सकते हो, राइट? HOH, राइट? सो एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ एक से दूसरे में वेरी करेगी. सो टू मेजर, टू कंपेयर वन डाइपोल फ्रॉम द अदर, स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम डाइपोल को एक वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से मेजर करेंगे. सो द ईच डाइपोल इज डिफरेंशिएटेड विद द टर्म ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, symbol P. It's a vector quantity defined as product of charge and separation distance. Either charge, दोनों charges equal है, किसी एक की वैल्यू ली, so either charge and separation distance. For this case, you can go for this Q into L. Now take care, आपने क्या लिया? आपने दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को L लिया है, then go for Q into L. आपने दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को 2a लिया है, then it is Q into 2a. Hope it is clear, right, my dear? So this is the part. Now SI units, it's coulomb meter. SI units, coulomb meter. Now as it is a vector quantity, so the direction of P is from negative to positive, right? So it's like that कि बीच में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाए, वो कहाँ जाएगा? वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा. That's why the dipole moment having direction from negative to positive. If a child draw this picture like this, ये प्लस q है, ये माइनस q है, तो dipole moment की डायरेक्शन इधर आ जाएगी. Make sure कि it is from negative to positive. Left right ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है. This is dipole moment. Clear? राइट. सो फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, राइट? आप उसको होल्ड पे ले सकते हो. एक क्वेश्चन पे जाएं प्लीज. सो क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास दो चार्जेस का पेयर है, राइट? टेक्स्टबुक क्वेश्चन नंबर 1.9. यू हैव बीन गिवन टू चार्जेस, वन इज QA, सेकंड इज QB. बोथ आर प्लेस्ड ऑन Z एक्सिस. ठीक है, ये मैंने सेंटर से लाइन बनाई आपकी सिंपलिसिटी के लिए, सो दैट आप एक्सिस को समझ पाए. सो दोनों की पोजीशन दे रखी है. वन इज प्लेस्ड एट -15 कोऑर्डिनेट, सो बीच की डिस्टेंस इज गिवन टू यू 30 सेंटीमीटर. वन कोऑर्डिनेट इज +15, सेकंड कोऑर्डिनेट इज -15. बीच की डिस्टेंस आप इसको 2 मिनट के लिए ट्राई करें. आपके पास टाइम है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका डाइपोल मोमेंट निकाल के दिखाएं. इट्स ओके, राइट? पॉज कर ले वीडियो को, इसका डाइपोल मोमेंट सॉल्व करें एंड QA QB की वैल्यू मैं नोट करवा रहा हूं आपको. प्लस माइनस QB, QA इज -2.5 10⁻⁻7 कूलम, QB इज +2.5 -7 कूलम. So try this. Now the solution is, its formula is Q into 2A. Now P is Q, 2.5 10⁻�7 and 2A. Total distance is marked 2A. It is 30 into 10⁻². Why this -2 arise? ये सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया गया मीटर में.
It's okay. I hope you can solve it now. -8. Done? -7, -2, -9. Right? 75 into 10 power -9, 7.5 into 10 power -8 coulomb meter. One question. Right? One more question based on this. So एक छोटा सा पेयर कंसीडर करना. Now this is a pair. It is Q, and this is minus Q, and this is plus 2. Sorry, this is small q. Right? Now calculate dipole moment. Look, this is 2q charge. ये दोनों तो अलग अलग है. So is it a dipole? Yes, it is a dipole. There are two methods to solve this. एक इनका center of charge मान के और दूसरा इन दोनों को दो dipole मान के. Let me come to one method. One I leave for you. Try for this by considering center of charge. So इन दो dipole को कुछ इस तरह से divide करो. This is L minus Q plus Q. वर्चुअली इसको एक सेपरेट करके एक और डाइपोल यहाँ पे थोड़ा सा दूर करके प्लस Q and minus Q. Right? That's an equilateral triangle. So अब ये क्या है? Look, ये 2Q के दो वर्चुअल टुकड़े किए. One is plus Q and minus Q. Second is plus Q and minus Q. इसका डाइपोल मोमेंट भी P, इसका डाइपोल मोमेंट भी P. माइनस से प्लस की तरफ कितना आएगा? आप वीडियो होल्ड करके ट्राई करें, फिर दोनों को 60 डिग्री एंगल पे ऐड करके नेट डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करें. ट्राई दिस माय डियर. सो द आंसर इज पहले का डाइपोल मोमेंट, दूसरे का डाइपोल मोमेंट Q into L. नाउ लुक, अब की बात 2a नहीं है. द डिस्टेंस इज टेकन टू बी L. दैट्स व्हाई इट इज Q into L. ये दोनों का डाइपोल मोमेंट है. नाउ टू डाइपोल, दोनों की वेक्टर डायरेक्शंस हैं, दोनों 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं. तो दो वेक्टर 60 पे एक्ट करते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट सबने 11th में पढ़ा होगा. a square plus b square plus 2ab cos theta. It is cos 60. Cos 60 is half, कैंसिल हो जाएगा इससे. So this is p net is √3 times of p, and this is p net is equal to √3 of QL. Right? This is the another example of dipole. Try कि एक क्वेश्चन आप इसका अपने आप करके देखें. Right? Next I am proceeding. Net charge on a dipole is always 0, but electric field near the electric dipole not 0. So we'll proceed to find electric field near a dipole. एक डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती. सो उसको निकालने के लिए हम दो पार्ट में जाएंगे. One is axial line, second is equatorial line. So let me proceed with electric field near a dipole on axial line. On axial line. Right? Consider a dipole. एक छोटा सा डाइपोल कंसीडर किया, -Q plus Q, सेंटर O, और उसके आसपास टेक केयर जो पॉइंट लिया जाए वो उसके सेंटर से दूर लिया जाए एज कंपेयर टू साइज. सो जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा, डाइपोल को छोटा मान के चलते हैं. आइडियल डाइपोल वो होता है जिसमें दोनों चार्जेस, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस. आइडियल डाइपोल उसको कंसीडर करते हैं जिसमें एक डाइपोल थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस से नहीं बल्कि कम डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है. सो दिस डिस्टेंस इज a, this is also a, this is 2a. Right? ठीक है. This point given a name a, this point is b, this is o, and this point is n. So we need to find electric field at n due to this dipole. एक चार्ज की वजह से फील्ड निकालने में आती है, फॉर्मूला इज kq/r². तो इन दोनों की वजह से कंबाइंड इफेक्ट यहां पे जब निकालेंगे, दैट वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर डाइपोल. नियर पॉइंट हमने कहां लिया? एक्सियल लाइन. करेक्ट. सो द फर्स्ट पॉइंट एक एक करके. फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट n ड्यू टू प्लस q चार्ज. होप आपको फॉर्मूला याद होगा. इट्स E1 इज इक्वल टू इट्स kq अपॉन r माइनस a स्क्वायर. इस
एन पॉइंट पे यू कैन कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट को ये बी पॉजिटिव चार्ज वुड बी रिपेलिंग, तो इस फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और इस बी पॉइंट से इस एन पॉइंट की डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस आर है एंड दिस इज ए लेस, दैट्स व्हाई द डिस्टेंस इज आर माइनस ए, राइट। आई रिपीट, bn distance is actually r minus a less than r, center से distance r है whereas distance from the point b is r minus a। number 1 it's along bn, direction b से away है, positive charge से field outward होती है, that's why even is this। now come to the second part, electric field at n due to minus q charge, right? so this is E2, it's kq upon r plus a square। now distance measured from a, that's why this distance is r plus a, उतना ही extra हो गया, right। now direction looking to the sign, minus के लिए वो field इधर आ जाएगी inward, it's okay, so I can write this is along, it's NA, n से a की तरफ, right my dear। so the another approach, now these two fields are opposite but not equal, one is greater, ये greater क्यों है even, इसका denominator smaller है, and what about the second part, r plus a की वजह से this denominator is larger, so E2 is smaller, so net field at n कितना आएगा, so this is E net is equal to E1 minus E2, both are opposite, E1 is greater, put the value, it's E net is equal to, E1 is KQ, common 1 upon R minus A square and this is 1 upon R plus A square। आप इसको solve करें, it is KQ, LCM is r square minus a square whole square, you can use the property a plus b into a minus b, a square minus b square, this would be r plus a square minus r minus a square, right। expand the square, so this is kq, so यहाँ r square plus a square plus 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस की वजह से डिनोमिनेटर रिमेन सेम, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। व्हाट वुड बी कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी 4ar और उस 4ar को प्रोडक्ट ऑफ 2a एंड 2r लिख रहा हूं, क्वांटिटी इज 2ar प्लस 2ar, इट वुड बी 4ar, दोनों को 2a into 2r लिखा सो दैट मैं q into 2a को p की टर्म में ले सकूं, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, इट्स ओके, E net, right। so this q into 2a marked as p, so this is k p magnitude only 2r upon r square minus a square whole square, right। so this is E net, done my dear, ठीक है। approach is this, so the total field is kp 2r r square minus a square, number 3। now for an electric dipole, as we considered the distance r is much greater than a, apply this and इस रिजल्ट को थोड़ा सा समराइज करते हैं। if r is much greater than a, you can write for a small dipole, एक छोटे डाइपोल के लिए this quantity can be considered as small, क्या करें, so r square minus a square would be approximately r square, so the formula become E net is equal to k p 2r upon r power 4, एक r कैंसिल हो जाएगा, right। ultimately what remain, E net is equal to twice kp by rq, the final result, have a look, E net is equal to twice kp by rq, so this is the ultimate result,
कंपेयर दिस रिजल्ट विद ए पॉइंट चार्ज। एक चार्ज के लिए जो रिजल्ट आता था दैट वाज kq by r स्क्वायर, उसमें इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता था, यहाँ rq। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? एक स्पेशल फीचर हुआ कि एक चार्ज के आसपास तो फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होगी, एंड इन केस ऑफ a dipole field decreases more rapidly. Let me explain this with an example. ये एक स्पेशल केस बना। एक छोटी सी बात को, इस रिलेशन को समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर करो। इसके आसपास फील्ड है E1 and this distance is r. Now consider this is a dipole जिसका डाइपोल मोमेंट p है, इससे भी r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, राइट? मैंने चार्ज के लिए डिस्टेंस डबल कर दी 2r, द फील्ड वुड बी 1/4 बिकॉज डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब अगर डाइपोल के आसपास फील्ड को डिस्टेंस को डबल करके देखा जाए, देन फील्ड वुड बी 1/8 2 क्यूब है ना। सो लुक, एक चार्ज के आसपास अगर डिस्टेंस डबल की जाए तो फील्ड बिकम 1/4, whereas नियर डाइपोल अगर डिस्टेंस डबल की, प्रोसेस सेम है, एप्लीकेशन सेम है, डिस्टेंस को डबल किया, उसमें तो फील्ड बिकम 1/4, इसमें फील्ड बिकम 1/8। So you can say that near a dipole electric field decreases more rapidly as compared to a single charge. ये blue one represent for dipole and this is for a point charge or single charge. Hope this concept is clear. Now this is about axial line. Same we can proceed. I request एक बार इस डेरिवेशन को लिख के देखोगे थोड़ा सा और उसकी एक प्रैक्टिस पे जाओगे। A written practice of this article is required, right? Now next go for equatorial line. इसका जो second part है, we can go for on equatorial line, line which is passing through the center of the line joining the two charges, right? Consider फिर से वही सेम अप्रोच, एक डाइपोल कंसीडर करना है, -q + q, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p = q × 2a, right? Now the equatorial line, the point perpendicular to the line joining, ये सेंटर से जो लाइन है जब इसको ज्वाइन करेगी तो this point is known as equatorial point, right? For the resolution मैंने ऊपर उसको डिवाइड किया, ठीक है? So this is a, this is b, this is o, a distance both, and this point is n, same. Now it is not axial line, it is equatorial line. Process is same. वहां भी हमने एक एक करके दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ फील्ड निकाली थी, यहाँ भी दोनों की वजह से निकालेंगे। Proceed. Electric field at n due to plus q charge. Now look, this central distance is r. Now apply Pythagorean triplet. This would be r square plus a square. Similarly, this distance is r square plus a square root. ठीक है? इस पूरे ट्रायंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर लो. This is theta. ठीक है? A distance. Now this is 90. So this distance, it's an or bn, both are equal. An equal to bn, both are under the root r square plus a square. Done. So that's another part. So find electric field at n due to plus q charge. The formula is same, but the distance is this time is r square plus a square. Root का square होना था. That's why it become r square plus a square, right? And direction is same idea along bn. मैंने सिंबल्स नहीं चेंज किए so that हम उसको लिखें तो वो सेम रहे. So bn is, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, इसको ये रिपेल करेगा. This is E1, right? Am I clear, my dear? Hope it is visible, right? Next one is electric field at n due to minus q charge. So this is kq upon r square plus a square. Value is similar. The only thing is that due to minus q charge, this would be inward. So I am using vector sign in the diagram and scalar here for the mathematical value, magnitude only. It's along
Na, right? So both are equal in magnitude but different in direction. So to add these to even A2 मुझे resolution use करना है. So may I draw this figure here again, थोड़ा सा bold करके diagram यहाँ दोबारा बनाते हैं. So where is E1? This is E1. Where is E2? Here it is E2. Now look at the part. If it is theta, तो ये theta होना था, right? Corresponding angles. That's why E1 के दो टुकड़े आएंगे, vertically upward E1 sin theta and horizontal left E1 cos theta. इसी तरह से look at this part, vertically opposite. So this angle is also theta. तो sin component तो opposite हो जाएंगे और cos component दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएंगे. ठीक है? Hope you did remember the resolution of class 11th. दोबारा जहां एंगल बन रहा था वो तो cos आएगा. So cos component इधर और sin उसका ऊपर. ये नीचे था E2, इसका cos component इधर और इसका sin component नीचे. अब look at the diagram. ठीक है? क्या from figure sin component cancel out in pair और net field दोनों cos component के add होने से आएगी. That's why E net is equal to twice, so go for first E1 cos theta plus E2 cos theta और E1 E2 दोनों equal है, so you can write this as twice E1 cos theta. E1 या E2 either you can choose. E net by dear, right? So इन दोनों को add करो. E1 या E2 किसी की वैल्यू पुट करके cos थीटा की वैल्यू 1 मिनट का होल्ड हुआ, इन दोनों को पुट करने की कोशिश करें बच्चों. What would be the value? E net twice E1 is KQ upon R square plus A square, right? And what about cos theta? Look at that triangle. Cos theta is small a upon R square plus A square root or half power. Now club it. K, Q, 2A. Again the same approach. मुझे इसको P बनाना है, dipole moment. That's why it is R square plus A square. ये 1 power, ये half power. This become 3/2. So this is E net is equal to KP. P into QA, Q into 2A replaced with P. So this is R square plus A square power 3/2, number 4, right? So this is the final expression. Here we can also add कि if dipole is small, same approach. If R is much greater than A, then क्या करेंगे? A को neglect कर देंगे. So ultimately expression क्या आएगा? E net is equal to Kp by Rq. Now look, P is in this direction and net field is in this direction. In order to represent the vector, we use negative here. It is minus Kp by Rq. Compare it with the axial line. It was twice Kp by Rq. Axial line में result इससे double था और direction P की direction में थी. It was E axial twice Kp by Rq and E equatorial it's minus Kp by Rq. You can use this result कि अगर मुझे न्यूमेरिकल में दोनों जगह पे फील्ड निकालनी है तो मैं किसी एक को निकालूंगा और उसका हाफ इसमें हो जाएगा, या इसको निकालेंगे इसका डबल उसमें हो जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज हाफ एज कंपेयर टू द axial line. Is it okay? Second change is that in axial line direction of resultant field is along the P dipole moment, whereas on the equatorial line it is anti-parallel, right? These two are the applications. Further you can use these two articles for anywhere. It can be in the form of a numerical, right? In the next lesson, next video we'll proceed for this. These are the two applications, 2 points of electric field notation, axial and equatorial line. Hope it is that clear to everyone. Thank you everyone.